Assalamualaikum, everyone. Thank you for joining. We have a good number of participants that have joined now. So without much further ado, I think let's jump right into it. I'm seeing that there's mostly people who had joined our Gender Lens investment training at NIBAF on 30th of August. But since there's a few names that are new, I will just begin giving a slight introduction just so we're all on the same page, and then we will proceed with today's demo session led by Fawzia and Fiza. So firstly, I'm Mavra Bari. I am the communications expert and gender focal point for the Pakistan Private Sector Energy Project. And it is my honor to welcome all of you to our follow-up webinar to our Gender Lens investment. So just a little bit about our project. We were launched in February 2021. And PPSE is a Pakistan-specific project of the Private Financing Advisory Network that focuses on expanding the portfolio of commercially viable clean energy and circularity projects globally and, of course, in Pakistan by providing support to enable them to access financing and reach financial closure. Since we know that the clean energy sector, the financial sector is very male dominant, but yet, women are one of the fastest growing markets in the world and are very good consumers of financial products. So we wanted to align the financial work being done in this space through a toolkit that our consultants have made, and also some resources from the Financial Alliance of Women. So I would like to now introduce our trainers. Firstly, we have Fiza Farhan. She is the CEO of Aura Global Development Advisors. She's a leading global expert on issues pertaining to inclusive economic growth, climate change, sustainable development, financial inclusion, women empowerment, and has advised governments and private sector, as well as development agencies, such as the United Nations, on critical development issues. She's also the youngest member of the UN Secretary General's high-level panel on women economic empowerment, which makes her very much suited to giving such a training. Then we also have Fawzia Ali Banouri, who is a bona fide finance expert. She is product development specialist and inclusivity and trainer as well. She's a dedicated finance specialist with a strong background in research and financial planning. And she has a special focus on marginalized groups. She also has 14 years of experience in the banking, marketing, and advertising industry, and is currently serving as the divisional head of marketing at the Bank of Khyber. So I would just want to, before I hand it over to our very capable trainers, just a few housekeeping rules. If you would like to speak or if you have any questions, we have a Q&A function. We'll be taking the questions at the end. We'll be giving about half an hour, so around the 12:15 mark. So please do put your questions in the question and answer function. If we can answer your questions as the session is going, we will do our best. But if not, we'll try our best to answer all of them with Fawzia and Fiza at the end. So Fawzia, Fiza, over to you. Perfect. Thank you so much, Mavra. Hello, everybody. I wish I could see you all, because those of you who attended the training know that both me and Fawzia love to engage and love to see our people and then, kind of have a very engaging session. We will still try to make it the same. So since I'm not too sure how many attended the session earlier and how many are new, just to give a background that obviously we all understand the importance for the banking on equality policy that the State Bank, the regulators have issued, and how it has become extremely critical for us to embed the gender lens in all our financial decisions, be it within products, be it within services, be it within cultures or teams, right? So we had an extremely engaging one-day session, and we got really good feedback from the participants who were mostly financial and banking experts. There we had the whole day to us to discuss the policy, the banking on equality policy, other initiatives by State Bank. Why is it important to create this gender lens for financial inclusion internally and externally? How can we create this nexus between women empowerment, economic empowerment? How can we capitalize the untapped virgin market, I would say, for Pakistan with the unbanked female customer base, making it a business case for all of us? And we had lots of good interactions, lots of good case studies coming out of things that are already happening in Pakistan and globally.
But one thing that we shared with all of you briefly there as well, and then after the training, and which is actually the whole the nucleus, I would say, of this entire training on generalized investment, is this manual for the Financial Alliance for the Women Business Case and the toolkit that Fawzia shared with all of you in the training as well, and took you briefly through it. Obviously, we had one day and so much to cover. So we felt later on that because these are really good documents, by the way. These are global best practices. I urge you all and I encourage you all to deep dive into them line by line, dot by dot, and really absorb them after this training. If you've not already done so, I would be very happy to hear if some of you have already deep dived into them, because that's going to make this session engaging as well. And if you feel that other members from your team can benefit from these documents who are more relevant to the banking on equality policy or product development, please share them with them as well. And this would become like a TOT for you as well, so that you can get trained on the manual and the toolkit, so you can take it further to your teams as well. So after the training, we just thought with the PFAN team that it might be a good idea to just deep dive into these two things with you in detail in this 1.5 hour session that we are all together for online today. We're just going to be deep diving into the manual, which you already have. And Fawzia will take you through the manual so that you go through it with us and you understand the real value of it. Again, I will just emphasize how valuable this is for you if you're looking to create this nexus and creating a gender lens investment framework with practical actions and practical tools in your organization. And then we will also go towards the Excel and play around with it with you so that we can input some values together and we can actually lead to a woman-centric product today. So without further ado, because again, we have a lot of things to cover within this 1 hour before we open the floor to Q&A, I'll pass it on to my dear co-trainer and financial expert, Fawzia Libanuri. So Fawzia, the floor is all yours. Thank you so much, Fiza. You couldn't have summed it up in a better way. Hello, everyone. Assalamu alaikum. Acha, it is very, very critical that all of you have the documents. So please raise your hands if you don't have them. So the Global Business Financial Service PDF, it was emailed to you, and then you should also have the Excel file, because what we will be doing today is doing a practical of this. So this file should be there. And this PDF should be there with you so that I can, so you can also open it up on your screens and do it. So please let me know if somebody doesn't have it. I can send them to it in a chat here. Mavra's already sent the resources in the chat box in case somebody doesn't have them. Okay. So let's start. Fawzia, I've already sent the resources. There is, if everyone can see, Financial Alliance for Women Business Case Manual. Fawzia will be showing as well, but the toolkit is right below. It's an Excel file. All right. All right. So everyone emailed as well to participants. So hopefully everyone has them. Yes. Without further ado, let's start. This is a global business case tool for financial service providers. So if all of you are somehow or the other related to financial product development, this is a tool which will help you build a business case for the women segment. The presentation that we had, we've already talked about these figures, that only 7% of women have have account, and around 82% women in Pakistan are underbanked. Then the next figure that we talked about is that which forms the very basis of this business case, is that 49% of your population is women. And these women are not offered any financial service which is tailored to them. In the recent years, different banks in Pakistan have come up with various tailored products for women, but they are a mere they're a same product with just a pink color or just a few features here and there. It's not really tailored for women. So how this tool is going to help you how to make a business case, and it will show you how to make a business case if you are ever making a retail product for women, or if you're making an SME product for women. The reason that I want you to go through this PDF with me is so that you understand how this tool, how this PDF file, which is the toolkit with the Excel file, helps you understand the Excel file. And in future, if you have any issue about any figure that is there or any entry that is required there, you can still, this is the Bible that you have to follow. You can come back to it and it tells you exactly what to do.
So I'll just quickly go through the contents and introduction to the women's market. Quantifying the women market opportunity. Abhi jo maine baat ki. What is the global women's market opportunity? Global women market opportunity kya hai? Local kya hai? Humse zyadatar jo relate karta hai wo local women opportunity hai. Estimating the financial benefits of targeting women, the value of targeting women with a tailored approach, and results from alliance members. So this toolkit basically in the first section tells you about the external data that is available in Pakistan. And what's interesting is all of this data is inbuilt in the tool. So you don't have to, so you know how it saves you time. You don't have to do any research. You don't have to collect any data. You don't have to find any resources. It's all plugged in. All you have to do is plug in your internal customer data and it will churn out the results for you. So in the first section, it talks about the bigger picture, about global financial opportunity for women, and then about the local financial opportunity for women. And actually, this tool is designed as such that once you do the country selection, it will automatically turn into your own country. And in this case, we're going to pick Pakistan. Then about this tool, disclosures about the data sources are included in it. A blueprint for developing a tailored approach for women. This is like a blueprint, just like I talked, and methodologies for investment decisions for women's market. Putting it all together, this tool is going to help you prepare for your pitch and develop your pitch. So the flexibility of the tool is such that you can completely rely on it, or you can take inspiration for it and make your own financial tool, which I do in my case. Like I learned it, I went through it, I went through every cell, I tried to understand every formula which was there. And these are very simple formulas, not too complicated, nothing too complicated for me to understand. And then I developed my own tool. So you can actually mimic the same, addressing your own need. For example, this talks about retail and SME market both. If you're from the consumer side, you can talk about the retail tools. And if you're from the SME side, you can talk about them. Using this tool, internal analysis, external analysis, market sizing, market share projections, and financial returns. Now let us go down, and I want to show you the thing that we talked about, results from alliance members. These are different countries, और उसमें पाकिस्तान की अगर आप पोस्ट देखें यहाँ पर, तो HBL का जो निसा कार्ड उन्होंने लॉन्च किया था, उसका बेसिकली छोटी सी समरी है यहाँ पर कि कैसे 8 से 2017 में वो 11% से चला गया और कैसे उसने ग्रोथ देखी. दिस इज अ वेरी फेमस बिजनेस केस विच इज कोटेड इन ऑल ऑफ द trainings relating to women financial product development. So this यहाँ पे पाकिस्तान का भी जिक्र है, thing for us to be proud of, and it's an experience that we can learn from. So I'm going to go down and I'm going to take you to this place. Okay, this is the map of the worksheet which is included in the tool, and I will go through it one by one so that you understand कि ये किस तरह से Excel काम करेगी. जब हम Excel पे जाएं तो you have this idea. So सबसे पहले है internal analysis, worksheet है internal data की, और इसमें हाँ ये जो शीट है ये एनालाइज करती है फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर या बैंक का करंट रिटेल एंड SME कस्टमर डाटा टू अंडरस्टैंड कि हाउ योर बैंक इज करंटली सर्विंग विमेन. ठीक है, और इसके जो रेलेवेंट सेगमेंट्स हैं वो रिटेल एंड SME है. इकोनॉमी एंड डेमोग्राफिक्स है. ग्राफ्स बनेंगे इसमें ऑफ रेलेवेंट एक्सटर्नल कंट्री डाटा टू अंडरस्टैंड द डेमोग्राफिक्स ऑफ द विमेन मार्केट इन योर कंट्री. Financial behavior, insights on the financial behavior of women on your country. Now, this is very, very valuable research. By the way, this report is updated every year with the fresh data, and this data is till December 2022. So, आपके मुल्क में खवातीन का financial behavior क्या है? कौन से segments हैं जहाँ पे वो खर्च करती हैं? किस तरह से वो save करती हैं? These are such interesting things that you can find out when you go through this data. फिर SME market analysis है इसी तरह, breakdown of women owned SMEs in your country and their financial behavior. Legal and business environment. Now, this is also a very, very good slide. So basically, it lists down all the regulation and all the laws that kind of serve women or don't serve women. You need to know the legal framework of your country to be able to think of a product. Maybe you think of a product which is excellent, but the regulation doesn't allow
या उस रेगुलेशन की वजह से या किसी लॉ की वजह से उसके अंदर कोई चीज आ जाए, तो यू नीड टू बी वेल वर्स्ड विद द लीगल एंड बिजनेस एनवायरनमेंट. यू नीड टू नो what you can curate remaining within these regulatory and legal limits. Then there is a retail market sizing tool hai, which shows you basically. So इसमें TAM और TOM और SOM का मॉडल इसमें इन्होंने यूज किया हुआ है. So basically first they're saying कि टोटल मार्केट साइज क्या है. सो जब भी आप अगर प्रोडक्ट डेवलपर्स हैं या पॉलिसी मेकर्स हैं या क्रेडिट रिस्क स्कोरर्स हैं या आप बिजनेस के लोग हैं, तो सबसे पहली चीज ये होती है कि सबसे जो लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट होता है वो आपका इंटरनल कस्टमर डाटा होता है, और वो ये होता है कि आप इंटरनली अपने कस्टमर्स को कैसे सर्व कर सकते हैं. तो लो हैंगिंग फ्रूट सबसे पहले तो वही होता है जो आपकी एग्जिस्टिंग फीमेल कस्टमर है. बट मोस्टली बैंक्स जो है, अभी स्टेट बैंक की पॉलिसी जब से बैंकिंग ऑन इक्वालिटी आई है, बहुत ज्यादा ये चीज फेस कर रहे हैं कि देयर इज नॉट इनफ डेटा, जेंडर डिसएग्रीगेटेड डेटा नहीं है. उसके लिए SBP भी एफर्ट्स कर रहा है, और अब बैंक्स को उन्होंने कहा है कि वो जेंडर डिसएग्रीगेटेड डेटा बनाए. पर आपके बैंक में जो भी कोई MIS या एनालिटिक्स के डिपार्टमेंट होगा, वो आपको जेंडर डिसएग्रीगेटेड डेटा दे सकते हैं. तो जहां पे मार्केट साइजिंग की बात आती है, तो एक चैलेंज ये भी है कि ना सिर्फ ये कि खवातीन का फाइनेंशियल बिहेवियर हमें पता होना चाहिए, बल्कि हमें पता होना चाहिए कन्विंस करने के लिए. से फॉर एग्जांपल यू प्रेजेंटिंग इट टू द बोर्ड कि इस वक्त पाकिस्तान में कितनी खवातीन हैं जो कि पोटेंशियल कस्टमर बन सकती हैं. सो देयर इज एन इंटरनल कस्टमर विच इज अ लो हैंगिंग फ्रूट, जिनको आप क्यूरेटेड प्रोडक्ट ऑफरिंग कर सकते हैं. एंड देयर इज एन एक्सटर्नल होल अनटैप्ड मार्केट, क्योंकि बैंक के लिए भी वैल्यू जो होती है न्यू टू बैंक कस्टमर की वैल्यू ज्यादा होती है per customer. So how can you tap that potential as well? And something that I learned very early in my career when I used to work for EMAR, and there we used to do these market sizing tool exercises. So there was this really interesting thing, that there was only a certain percentage of that potential, and on a very, very conservative side of that potential market, that you would take into account for. But even taking a very conservative percentage of that entire market, it really blows up your business case in the positive direction and makes it really right. जो भी untapped potential market होती है, it is harder to convert. But once you start offering those products, once you start offering the right product through the right process of obtaining the product and through the right marketing tools, then that's a huge piece of cake, and you will always have the first market advantage also. Like, you are the first one to grab that market. So right now it is really for anyone and everyone. It is who is going to educate themselves quicker, faster, so that they can grab that share. So that is why this retail market sizing tool and SME market sizing tool is so important, and you can use it in your presentations and in your product papers कि ये इस वक्त currently Pakistan में size है. Then we talk about market share and revenue analysis. So basically, once you put in the data of your own bank or of your own financial service provider, जहाँ भी है, fintech में है, microfinance bank में है, SME जहाँ भी हैं आप अपने बैंक का जब डेटा उसमें डालेंगे, तो आपका कितना शेयर है against the whole market, ये आपको वो भी कैलकुलेट करके बताएगा. These are really important numbers that these big business decision makers or managers or senior management is really interested in, कि how do we fare against the market के against हमारा क्या वो है. So this is going to help you in that. Financial return analysis tool, this is really interesting. Basically इस शीट में ये आपको ऊपर आपकी एक्सपेंस की पूरी एक ब्लॉक देता है, जिसमें आप अपना एक्सपेंस पुट इन करते हैं, और नीचे ही ऑटोमेटिकली आपका फिर रेवेन्यू कैलकुलेट कर देता है. सो इट्स वेरी सिंपल. जो इंटरनल डेटा जब आप पुट इन करते हैं, तो वहां पर ये क्या करता है कि ये पर कस्टमर प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करके दे देता है कि आपका पर कस्टमर प्रॉफिट इतना होगा पहले साल में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में. और फिर ये उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लेता है कि अगर आप इतने कस्टमर मजीद एक्वायर करते हैं, तो फिर this will how your revenue is going to become. फिर एंड पे जो इस शीट है एक्सेल की, इसके अंदर डाटा पॉइंट्स एंड सोर्सेस हैं. जस्ट गोइंग थ्रू इंटरनल कस्टमर डेटा की, फिर ये देखें इंटरनल एनालिसिस. इसमें पूरी आपको एग्जांपल्स दी हुई है, इसमें आपको पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है. इट्स नॉट दैट लॉन्ग. प्लीज डू गो थ्रू इट. आई थिंक इट्स अ वेरी गुड टूल फॉर यू टू study and be well versed when you're discussing it with somebody. So using the tool, once you have sex disaggregated account data, you will see worksheet 1 internal data in Excel file to input the numbers. This worksheet is divided. तो ये देखें, ये आपको total number of men and women customers, total loan portfolio held by men, and total non-performing loans held by men and women. यानी it also explains
These are the informations, जैसे ये जो एक पेज है, आप अपने बैंक के जो भी MIS एनालिटिक्स के लोग हैं, जो कि MIS बनाते हैं, एनालिटिक्स बनाते हैं, आप उन्हें ये वाली शीट भेज सकते हैं कि जी दिस इज द नंबर, यानी टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स, आगे उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि ये डेटा हमें इस तरह से आप प्रोवाइड कर दें. वंस यू हैव दिस डेटा, यू कैन प्ले अराउंड विद योर एक्सेल. So it is total credit portfolio. Total credit portfolio is total outstanding portfolio. Total number of loans, revenue from loans in million, total number of saving accounts and deposits. You would agree with me, these are very simple data. So सारे बैंकों में ये data होता है. Usually ये gender disaggregated नहीं होता, यानी men and women में divided नहीं होता, but generally people have banks have this data. Total number of saving accounts, deposits, total deposit volume in millions, total revenue in million, percentage of non-performing loans, average number of products per customer, average number of years with the bank, customer satisfaction score or NPS. Customer satisfaction score आपको मिल जाएगा आपके customer services से. NPS score is basically आपके promoter minus the detractors is equal to your customer satisfaction score. यानी आपके कितने customers हैं जो आपकी सर्विस को recommend करेंगे किसी और को. आपने अक्सर देखा होगा customer services forms के ऊपर, online forms के ऊपर ये लिखा होता है कि जी whether you will recommend this to another person, and sometimes people are talking negatively about it. So you take the total number of customers that you have who will promote your service and minus it with the number of customers who don't have, who are not satisfied, and that equals to your net promoter score. So basically it's a simple calculation. I'm just educating you guys also. A lot of you might know it as well, ताकि आप जब अपने customer services से बात करें तो आप उनसे ये score भी लें. तो आप ये देख सकते हैं कि कितना thoroughly और कितना जिसे कहते हैं ना in detail ये आपको बताता है कि आपने डाटा कैसे कलेक्ट करना है. और इसी में आप आगे जाए, एक्सटर्नल एनालिसिस है. इसमें एक्सटर्नल एनालिसिस इकोनॉमी और डेमोग्राफिक्स क्या है, आपने कैसे कंट्री सेलेक्ट करनी है. फिर इसमें एज ग्रुप के साथ भी आ जाता है, फाइनेंशियल बिहेवियर भी आ जाता है. फिर ये यूजिंग द टूल इसके अंदर लिखा हुआ है कि कैसे इसको यूज करना है. SME एंड मार्केट एनालिसिस, इस पे मैं अभी ज्यादा इसलिए नहीं जा रही कि मैं चाहती हूँ कि आप लोग लाइव ही ये देखें. लीगल एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, पूरी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है. How to use the tool about it. Market sizing, estimating the total number of potential customers in a defined market will help your FSP determine the breadth of the women's market opportunity. Conducting a market sizing exercise involves first understanding the total size of the market, जो मैंने अभी आपसे बात की, that could potentially be served, the total available market, TAM. If there are no constraints such as competition or distribution channel, this number equates to the total universe of customers that could potentially have access to financial services. A high TAM can show the potential growth capacity in a particular market. However, it can also indicate a lack of demand or accessibility. ये मैंने जो आपको बताया था, TAM, SAM and SOM. TAM is total available market, SAM is serviceable available market. यानी TAM जो होगी, अगर फर्ज करें TAM ये है कि 49% of Pakistani women are females, but how many of them are above the age of 15? जिनको आप जिनका ID कार्ड बनाए above the age of 18, जिनको आप ये सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, तो वो है सर्विसेबल अवेलेबल मार्केट. एंड SOM is सर्विसेबल ऑब्टेनेबल मार्केट. यानी इनमें से कितने हैं जिनको आप पहुंच सकते हैं. बहुत सारी इनमें रूरल एरियाज में होंगी, बहुत सारी सिटीज में होंगी. सो मे बी यू कैन, योर SOM विल बी primarily women who are comparatively living in better areas. So this is the model that is used. It's a funnel model. This is how you put the data in and you get the potential number of customers that you can actually reach out to. How bankable is the population? Right next to it, how big is the population of unbanked and underbanked? Are there major structural challenges in place and need to be addressed at a first step, and will that take time? What are your bank's current offerings and how different do they have to be to appeal to women? How long will that take? Where does your bank sit strategically in the market? Is there a market leader that has already captured a large percentage of the women's market? These are all those relevant questions that you need to ask yourself, and you need to address while developing a business case. Retail market sizing tool के बारे में बात हुई है. Women are unserved, women are underserved. Two categories of women. Unserved are those जो कि बिल्कुल जिनका कोई अकाउंट ही नहीं है, जिन्होंने कभी कोई फॉर्मल फाइनेंशियल चैनल यूज ही नहीं किया. एंड यू विल बी रियली सरप्राइज्ड टू सी अ लॉट ऑफ एजुकेटेड वुमेन आल्सो नेवर यूजिंग अ बैंकिंग चैनल और अ प्रॉपर फॉर्मल फाइनेंशियल चैनल. सो दोज आर अनसर्व्ड, जिन्होंने जिंदगी में कभी बैंकिंग. और वहां पे फिर एक जो चैलेंज सबसे बड़ा आता है वो फाइनेंशियल लिटरेसी का आता है, जिसके ऊपर काम तो बहुत हो रहा है, बट मे बी you as a product developer for a bank, you know, this is not an area where you would like to focus on.
I mean, financial literacy is the government's responsibility and they will do it. I mean, bank can take this responsibility up as CSR in parallel to product that they're offering to women. But this is, agar main financial sense banane ki baat karu, so this is an area where you don't want to go, you want to go women who are underserved. So women, underserved women are those who are dissatisfied with the financial service. Women who are not happy with the product offerings that the bank has to offer. क्रेडिट कार्ड कस्टमर्स हो गई, आपके एसएमई जो लोन लेने के लिए जाती हैं. मतलब women actually, मैं आपके साथ ये statistics share करूँ कि women are actually better performers as far as loans are concerned, lending is concerned. Yet you must have noticed in your own banks also that when women apply for a loan, especially for a business or something, the due diligence takes longer. I mean, people are more scared because they don't trust in their ability. They don't trust in their ability to pay back because of that gender bias that we have inbuilt in ourselves, that because it's a woman who owns a flour mill, she's just doing it as a hobby. She'll just, it's not something I cannot recover a loan from her from 20 years later because she'll just lose interest in it. She's not serious about it, and all of those things. Of course, when you treat women like that, when they apply for a loan, for a mortgage loan, for a personal loan, for a credit card, for anything like that, women are going to be basically dissatisfied. So your potential market is going to be the existing customers that you already have, those women that you already have. Maybe curate a product for them, make them your happy customers, turn them into really, really happy customers. Women talk. There's one thing that we can do, and that is talking. Like, we talk, we gossip, we tell each other about things. We recommend spa services to each other. We recommend the best physiotherapist to each other. We recommend the best psychotherapist to each other. We will recommend a service. Men don't talk. Men don't talk about these things. And yet we've been serving men more. Apologies to the men who are here. But women talk. And so you see, there is a huge opportunity. And this can be a part of your pitch, that अगर कोई सेगमेंट ऐसा है जो रेफरल मार्केटिंग के जरिए आपके बिजनेस को मल्टीप्लाई कर सकता है, ग्रो कर सकता है, तो दैट इज women, because women talk, women recommend, women gossip, and women rely more on word of mouth. So imagine you are having only 500 women as your customers, and some of them have a credit card, some of them have a personal loan, some of them have a supplementary credit card, some of them are from SME sector and they have a little bit of business loan taken out in their name. Imagine pleasing them, and then imagine the potential. They will make their entire family come and apply for the loan. So imagine that imagine what this group of 500 happy women can do for you. You don't even need to spend too much money on marketing to get new customers to the bank. So underserved women, for bankers, for the financial community who are looking to develop a business case, not just because it's the social responsibility, not just because State Bank is saying, not just for compliance sake, but as a business opportunity, underserved women are your go-to target market. So और underserved women कौन होंगी? आपके अपने बैंक, आपके अपने financial institution की वो खवातीन जो कि आपकी सर्विसेज से इतनी खुश नहीं है ना. Trust me, I'm telling you, women are very hard to please also. You call them up and you ask them and they'll tell you 10,000 problems with your product or the way the product was given to them. I mean, access and operational processes and systems matter also. In fact, in the training, we focused on the policy part, the operational part, and the product part. So all three things need to be applied gender lens to. आपने एक product बहुत अच्छी बना दी, उसके ऊपर एक gender lens आपने apply कर दिया, but operations जो उस product को के हुसूल और उसकी delivery के लिए जो process है, you did not apply a gender lens on it, it is going to not be a good thing. Your good product will remain in the shelf and women are not going to get it. Similarly, if the policy is such that it excludes a lot of women as potential customers, then that is not going to be a good product. Your product is going to remain in the shelf because not enough customers are going to be there. Fiza wants to say something. Yes, Fiza. Yes, I'm just being cautious of time, Fawzia, and I'm thinking that we should run through the manual because I want to spend at least 20-25 minutes on the Excel before we open the floor to question and answer. All right. So coming to the, so this has all the definitions and everything.
So this will basically, if you go through this in detail, then you can talk about, then you can go through the Excel as well. I'm going to go to the Excel. All of you have the Excel open. So in the first slide, I must tell you, all the blue cells are the one where you will put data. In the white cells, the data is going to be computed automatically. And the gray cells, you're not supposed to do anything. So this says Financial Alliance for Women, Business Scale Tool 2019, version 3.2. The tool to help you calculate the benefits of serving women market size. इस tool के बारे में सारी information है यहाँ पे. आप यहाँ से drop down menu से अपना country select कर लीजिए. I have selected Pakistan. You can also select Pakistan. So if you have selected Pakistan, then I can, if majority of you have selected Pakistan, if you've opened the Excel sheet, I can go to the next slide. Guys, while going through the Excel, if you have any questions or any troubleshooting problems, just share in the chat box with us. All right. So since there is, I'm hoping that everybody has done it. After that, you go down and you select the internal data. Now, internal data analysis may enter the name of the financial institution below. I'm just going to start with any, you can add your institution's name or any, and I understand आपके पास अभी data नहीं होगा, लेकिन बाद में आप कर सकते हैं. So this is a field that you have to put in. And then यहाँ पे select currency है. You have to pick the drop down menu and go to Pakistani rupee. So आप ये dollars में भी बना सकते हैं और पाकिस्तानी रुपी में भी बना सकते हैं. So any currency that you want to make it. Enter the year of the data. आपके पास जो data है वो कब तक का है, यहाँ पे enter करेंगे आप. So retail customers at Bank of Khyber in 2022. ये यहाँ पे automatically populate होके आ गया है. अब यहाँ पर हम एक एक करके देखेंगे टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स. ठीक है, यूनिट्स यानी नंबर ऑफ कस्टमर्स बताने हैं. मेन वाली फील्ड यानी वाइट फील्ड है, ये आपने एंटर नहीं करनी. विमेन का डाटा आपके पास होना चाहिए और टोटल कितने हैं. तो विमेन फर्स्ट करें, हम अज्यूम करते हैं कि 500 विमेन कस्टमर हैं और टोटल कस्टमर कितने हैं हमारे पास. तो दिस शोज कैलकुलेट्स 5% विमेन एंड 95% मेन. और ये जो साथ में ग्राफ्स बने हुए हैं जिनको आप अपनी प्रेजेंटेशन में यूज कर सकते हैं, आप ये देख सकते हैं कि ये जो ग्राफ है ये ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होके यहाँ पे आ गया है. सो अगर मैं इसको चेंज करूंगी तो फिर ये ऑटोमेटिकली फिर चेंज हो जाएगा. सो दिस हैज, ठीक है. तो टोटल नंबर ऑफ कस्टमर हमने लिख दिए. उसके बाद टोटल क्रेडिट पोर्टफोलियो यानी टोटल आउटस्टैंडिंग पोर्टफोलियो कितना है. इन 500 खवातीन ने कितना लोन लिया हुआ है जो आउटस्टैंडिंग है और टोटल आउटस्टैंडिंग पोर्टफोलियो कितना है. जनरली बिलियंस में होता है, 2 बिलियन 3 बिलियन इस तरह होता है. तो आप यहाँ बताएंगे कि खवातीन का टोटल आउटस्टैंडिंग पोर्टफोलियो कितना है. हम अज्यूम करते हैं कि 150 मिलियन खवातीन का है और टोटल पोर्टफोलियो जो है वो 2 बिलियन का है. तो 0.1%. और अगर आप साथ ही जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आप अपने एग्जैक्ट वो करेंगे, एग्जैक्ट चीजें आप डालेंगे अपने जो भी आपके बैंक की हैं. मैं तो भी सिर्फ अजम्पशंस पे चल रही हूँ. ठीक है, तो ये सारे ग्राफ्स भी आपके साथ साथ पॉपुलेट होते जाएंगे. आई थिंक इसका ग्राफ नहीं है बट इट विल कम. सो आप देख रहे हो कि जब आप विमेन का डाटा डालते हो ना तो वो ऑटोमेटिकली मैन का डाटा खुद ले आता है. सो ये वाला डाटा आपको चाहिए होगा अपने एमआईएस यूनिट से. टोटल नंबर ऑफ लोन्स कितने हैं, 500 खवातीन ने कितने लोन्स लिए हुए हैं जिसके अगेंस्ट ये क्रेडिट पोर्टफोलियो है. तो यू कैन राइट एनीथिंग बेसिकली. टोटल नंबर ऑफ लोन्स, हम अगर कहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ लोन्स हैं, खवातीन ने जो टोटल नंबर ऑफ लोन लिए हुए हैं वो हैं 500 खवातीन ने 700 लोन्स लिए हुए हैं, क्योंकि कुछ खवातीन ने मल्टीपल लोन्स भी लिए हुए हैं. लेकिन टोटल मर्द हजरात यानी टोटल लोन कितना है, तो 7% खवातीन है, 93% मर्द हजरात हैं. ये कम ही होंगे फिगर्स, ये तो मैं अभी हाइपोथेटिकली डाल रही हूँ बट यू कैन से कि ये कम ही होंगे. रेवेन्यू फ्रॉम लोन्स, कितना रेवेन्यू आप कमा रहे हो लोन से. खवातीन के अगेंस्ट जो लोन आपने दिए हुए हैं उनके ऊपर कितना रेवेन्यू कमा रहे हो. 150 अगर आपका टोटल क्रेडिट पोर्टफोलियो है तो आप कितना एक रेवेन्यू उसमें से कमा रहे होगे. आई एम सेइंग 10 मिलियन. टोटल नंबर ऑफ सेविंग अकाउंट्स कितने हैं आपके बैंक में. बेस्ड ऑन माय ओन प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन आई कैन से टोटल नंबर ऑफ सेविंग अकाउंट होंगे 1 मिलियन. और खवातीन के, सॉरी उसमें से कम होंगे, तो खवातीन के होंगे तकरीबन वी कैन से 1 लाख अकाउंट्स. 1 लाख अकाउंट जो हैं वो खवातीन के हैं और बाकी जो हैं टोटल अकाउंट जो हैं वो 1 मिलियन है, 10 मिलियन है. Guys, if anyone has any inputs on the data as well and you would like to present a number or share a number, please do that.
so that we can keep as much engagement as possible virtually. अगर किसी का कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हैं यहाँ तक। अब यहाँ पे आपने नंबर ऑफ अकाउंट लिखने हैं, नंबर ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। फिर आपने नीचे लिखना है टोटल डिपॉजिट वॉल्यूम कितना है, यानी टोटल डिपॉजिट वॉल्यूम कितना है आपके बैंक का। Let me open the floor to some questions that Fiza might be able to Yes. answer. So I can give anyone who has a question speaking rights. If you could kindly raise your hand. Anyone who might have any questions. Amreen, I believe you had a few questions. Have they been solved? Hi, Amreen. If you'd like to ask a question from Fiza, please go ahead. Hi guys, thank you so much. I'm loving this training. I wasn't part of the training when it was held because I'm based in Karachi. So thank you for sharing the links and the material here. I really wish this was online so that everyone in the country could have participated. This is fantastic. And this is remarkable that someone's been able to conduct the kind of research into developing the segment and seeing how to conduct financial inclusion. But like I said, I wasn't there in the first meeting. So if you could just give a brief of what happened, because even if I'm in the website, downloads the stuff, if the aim is to be able to identify how to bring in more people in it, that would be great. I mean, maybe just a brief on the website. And also the second question I have is for the PFAN and USA team. Would there be more such trainings on idea flotation for financial inclusion on the gender lens side? It's just a seed that's planted in my head. Thanks. And I can be muted now. That's great. And can you also please introduce yourself, which institution you represent, because we didn't meet you at the training? I'm from Silk Bank Limited in Karachi, but I am one of those people who's moved from corporate investment banking after 20 years into the SME segment with the aim for developing the SME segment and well, building the access to finance for wherever areas are required. I mean, someday I expect that to be in the transgender or the financial disabilities. I think there's really a lot of areas to look into. So yeah, that's me. So thank you everyone for your patience once again. Fawzia, over to you. Okay, so I was asking these questions from my participant on this cell that we have right here, that revenue per customer, how is it calculated? Can somebody tell me how is revenue per customer calculated? You can write your answer in the chat box or you can raise your hand. Okay, revenue per customer is calculated by dividing the revenue by the total number of customers. So we have revenue from loans and then we have total revenues. So we are going to do the total revenue wala figure, which is 450. So this divided by, so this is E25. We are going to divide that by the total number of customers. So these are the total number of customers. So men are performing well. So 47,368 is the total revenue per customer. फिर इसी तरह आप यहाँ आएंगे और आप खवातीन के लिए यही करेंगे. So आप जो है वो total revenue in millions में जाएंगे, जो कि 50 million खवातीन के थ्रू आप कमा रहे हैं. Divide that by the number of खवातीन, the total number of women that are there, and 100,000. So you see, fewer women are giving you more revenue and more men are giving you less revenue. So in your case, in your bank's case, this figure might be different. But ये बड़ा interesting होगा आपके लिए जानना कि total revenue के revenue per customer खवातीन क्या बनाती हैं. So you know, I really enjoy these Excel, because these financial modeling tools, because they really tell you the behavior of the women that you have. So this divided by the total number of women, and this is 100,000, and then you're going to add the two. So this is the revenue that you're making per customer. So in retail के case में, this is very, very easy to do. अच्छा, अब आप लेंगे customer growth rate from previous year. ठीक है, customer growth rate from previous year, यानी आप देखोगे कि पिछले 2 सालों में या पिछले 3 सालों में किस percentage से grow किया है. So men are growing at what rate and women are growing at what rate, because this will help us eventually जब हम 5 year की projections बनाते हैं, 3 years की projections बनाते हैं, तो उसमें it is going to help us, because this growth rate will be applied in the end. So यहाँ पर आप growth rate डालेंगे, let's say for example 5% के हिसाब से आपके 3 customers grow कर रहे हैं, new customers आ रहे हैं, और 0.2% के हिसाब से आपकी
खवातीन आ रही हैं. सो दिस इज योर ग्रोथ रेट एंड देन यूर गोइंग टू ऐड द टू. अच्छा, ये मैं आपको अब दिखाना चाहती हूँ कि ये जब आप सारा डाटा इनपुट करेंगे तो ये आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे आपके जो ग्राफ्स हैं ये आप अपनी प्रेजेंटेशन में और अपनी पिच में, अपने प्रोडक्ट पेपर में यूज कर सकते हैं. ये साथ साथ आपके सारे के सारे, ये देखें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कितनी खूबसूरत ये हो जाती है साथ ही. सो यू डोंट हैव टू मेक एनी, ऑल यू हैव टू डू इज प्लग इन द डेटा एंड इट इज गोइंग टू. ये नीचे एसएमई सेगमेंट है, इसका डेटा भी हमने इनपुट नहीं किया, पर ये देखें टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स पर सेगमेंट, टोटल क्रेडिट पोर्टफोलियो क्या है, मेन का क्या है, खवातीन का क्या है, रिटेल कस्टमर का ग्रीन है, एसएमई कस्टमर का ये है, फिर टोटल डिपॉजिट पर सेगमेंट इन मिनट्स क्या है. अच्छा, मैं एसएमई का स्किप कर देती हूँ क्योंकि एग्जैक्टली यही चीज आपने एसएमई पे भी करनी है. मैं चाहती हूँ मैं आपको आगे भी चीजें दिखाऊं. सो एग्जैक्टली यही डेटा फील्ड्स हैं, एग्जैक्टली यही. ये आप देख रहे हैं टोटल नंबर ऑफ कस्टमर, जिस तरह हमने डेटा इनपुट किया है इसी तरह आपने टोटल नंबर ऑफ कस्टमर यहाँ पे पुट करना है. क्विकली अगर मैं कर लेती हूँ तो टोटल नंबर ऑफ कस्टमर एसएमई में आपके पास लेट्स से फॉर एग्जांपल 100 खवातीन है और टोटल नंबर ऑफ कस्टमर है आपके पास 5000, क्योंकि एसएमई सेक्टर के अंदर कम होते हैं. फिर उसके बाद आप कहते हैं कि टोटल क्रेडिट पोर्टफोलियो आउटस्टैंडिंग खवातीन का जो है वो तकरीबन 200 मिलियन का है और मर्दों का जो है वो टोटल और जो टोटल आउटस्टैंडिंग पोर्टफोलियो है वो तकरीबन 1 बिलियन है. आई एम जस्ट पुटिंग इन रैंडम फिगर्स, 10 बिलियन हो गया है, 1 बिलियन है. ठीक है. फिर आप कहते हैं टोटल नंबर ऑफ लोन्स कितने हैं, यानी आपने नंबर ऑफ लोन्स कितने क्रिएट किए हुए हैं अगेंस्ट दीज नंबर ऑफ 100 कस्टमर. तो हम कहते हैं हर खातून को आपने एक ही लोन दिया हुआ है, सो नंबर ऑफ लोन्स ये हैं, जबकि मर्दों को आपने ज्यादा भी दिए हो सकते हैं. सो आप ये कह सकते हैं कि 700, ठीक, 700 नहीं है बल्कि हम ज्यादा करेंगे, इसको हम करेंगे टोटल नंबर ऑफ लोन्स होंगे 5000 हैं तो 7000. ठीक है. फिर उसके बाद आप ये देखें परसेंटेजेस साथ साथ कैलकुलेट हो रही हैं एंड आई वुड लाइक टू शो यू कि आपके एसएमई का ये एसएमई का भी बनता जा रहा है साथ साथ ग्राफ. ठीक है ना. तो आप ये इसको फिल करते जाएंगे. फिर आप आएंगे यहाँ पर, आप कहेंगे रेवेन्यू फ्रॉम लोन्स आपको कितना मिल रहा है, तो आप ये कहेंगे कि लोन से आपको जो रेवेन्यू खवातीन आपको अर्न करके दे रही हैं वो तकरीबन दे रही हैं 500 मिलियन या 200 मिलियन, हम कर लेते हैं 200. ठीक है. और मर्द हजरात आपको जो रेवेन्यू बना के दे रहे हैं वो दे रहे हैं 700 मिलियन, बल्कि खवातीन आपको कम ही दे रही होंगे. सो आई जस्ट डू इट 50. आई होप आप लोग भी मेरे साथ साथ ये एक्सरसाइज कर रहे होंगे या मुझे देख रहे होंगे. टोटल नंबर ऑफ सेविंग अकाउंट, यानी इन्हीं लोगों के जिनके आपके पास एसएमई इनका सेविंग अकाउंट्स कितने हैं. तो ओके, टोटल नंबर ऑफ सेविंग अकाउंट्स कितने हैं खवातीन, इन खवातीन के ये 100 खवातीन है और इनके जो सेविंग अकाउंट है आपके पास वो 30, बल्कि आप ये हम कह रहे हैं कि जिनके पास अकाउंट होता है उन्हीं को हम देते हैं, तो 100 ही हैं सेविंग अकाउंट्स. और इन इन लोगों के हैं तकरीबन 6000, इनके पास मल्टीपल अकाउंट्स हैं. ये 5000 जो कस्टमर हैं इनके पास मल्टीपल अकाउंट्स हैं, जिसकी वजह से तकरीबन 6000 अकाउंट है इनके पास. अच्छा, फिर उसके बाद आता है टोटल डिपॉजिट्स इन वॉल्यूम. इन लोगों का टोटल डिपॉजिट इन वॉल्यूम कितना है, तो हम ये कहेंगे कि खवातीन का तकरीबन 500 मिलियन का है और मर्द हजरात का तकरीबन 5 बिलियन का है. ठीक है. अब हम कहते हैं टोटल रेवेन्यू इन मिलियन, यानी डिपॉजिट से कितना रेवेन्यू आ रहा है और इस प्रोडक्ट से कितना रेवेन्यू आ रहा है. तो अभी हमने देखा था रेवेन्यू लोन से हमें 50 मिलियन का आ रहा है, तो डिपॉजिट से हमें कितना आएगा, कोई भी फिक्र हम ले लेते हैं कि हमें डिपॉजिट से तकरीबन चलो 100 मिलियन का मजीद एडिशनल रेवेन्यू आ रहा है. ये जो एक प्रॉब्लम होती है ना बैंक्स के अंदर, कि जब हम कोई प्रोडक्ट बनाने जाते हैं ना तो आइसोलेशन में बनाने जाते हैं, हम उस कस्टमर को एज अ होलिस्टिक कस्टमर नहीं ले रहे होते. तो दिस टूल इज गोइंग टू हेल्प यू इन टेकिंग द कस्टमर एज अ होलिस्टिक अप्रोच. इफ हिज कस्टमर इज गेटिंग अ लोन, ही इज आल्सो गिविंग अस रेवेन्यू फ्रॉम द डिपॉजिट, एंड दिस डिस्कनेक्ट ओनली हैपेंस बिकॉज द usually the consumer banking division is not reporting into the banking group, जो आपका branch banking division है, तो consumer banking division अपने product अलग से बना रहा होता है. but this data you can get from them and you can make a very solid business case saying कि जी the same customer is giving us this much profit from deposits as well. so if you're going to make new customers, they're going to have deposits in our bank as well. अच्छा, हमने ये कहा कि जी टोटल रेवेन्यू जो खवातीन हमें बना के देती हैं डिपॉजिट से और हमारे लोन से वो 100 मिलियन है, और हम ये कहते हैं कि ये जो मर्द हजरात हैं ये हमें बना के देते हैं
बल्कि 100 मिलियन में ज्यादा बोल रही हूँ, ये हमें देती हैं 50 मिलियन। और मर्द हजरात हमें बना के देते हैं 500 मिलियन। तो आप आ जाए परसेंटेज ऑफ नॉन परफॉर्मिंग लोन्स। एसएमई में क्या है परसेंटेज ऑफ नॉन परफॉर्मिंग लोन्स? हम कहते हैं 7% नॉन परफॉर्मिंग है। इसको मैं फिर वही कर लेती हूँ, लेफ्ट ट्रिगर, एंड वी से कि जी 1% खवातीन जो है वो नॉन परफॉर्मिंग है। ये आप अपने बैंक का डाटा ही लेंगे, इसको आप यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर है एवरेज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स पर कस्टमर। आपने पर कस्टमर प्रोडक्ट्स कितने दिए हुए हैं? हम कहते हैं आपने 3 दिए हुए हैं और यहाँ पे आपने 1 दिया हुआ है, और ये आपका मिला के बनेगा 3 + 1 4। एवरेज नंबर ऑफ इयर्स विद इंस्टीट्यूशन, यानी कितने सालों से ये कस्टमर जो है बैंक का है। हम मर्द हजरात में फिर यही कहेंगे कि 2 ईयर्स से, और खवातीन का हम कहेंगे 5 साल से। एवरेज नंबर ऑफ इयर्स पर कस्टमर इज 2 + 5 दिस। एंड देन हम कहेंगे कस्टमर सेटिस्फेक्शन स्कोर, हम वी आर गोइंग टू से 60 + 10। ये मैंने आपको बता दिया पहले ही कि एवरेज नंबर ऑफ ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन स्कोर कैसे बनेगा। अब रेवेन्यू पर कस्टमर है, दिस इज एन एरर, तो ये हम यहाँ से इसको करेंगे रिमूव, क्योंकि रेवेन्यू पर कस्टमर आएगा थोड़ा, ठीक है। और यहाँ पे आप फॉर्मूला इंसर्ट करेंगे प्लस टोटल रेवेन्यू विच इज दिस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कस्टमर, ठीक है। तो आपका जो एक मर्द है वो एसएमई सेक्टर में आपको 91,000 का रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है, ठीक है। और फिर आप यही करेंगे, अगेन यू आर गोइंग टू डू दिस, दैट यू आर गोइंग टू सी टोटल रेवेन्यू इन मिलियन, 50 मिलियन डिवाइडेड बाय 100। एक खातून जो है वो आपको 5 लाख का प्रॉफिट बना के दे रही है, ठीक है। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू दिस प्लस दिस, 5,91,000। अच्छा, ये जो इंटरेस्टिंग फाइंड है ना, मैं आई वुड रियली लाइक यू गाइज टू कमेंट ऑन दिस एज वेल, कि जब मैं क्रेडिट कार्ड के पोर्टफोलियो को देखती थी तो उसमें भी मैं ये देखती थी कि खवातीन जो है वो कस्टमर्स कम है बट वो रेवेन्यू ज्यादा जनरेट करके देती थी, क्योंकि वो स्पेंडर भी ज्यादा होती थी और वो रिवॉल्वर भी ज्यादा होती थी और उनका डिफॉल्ट भी कम होता था। सो खवातीन women वर बेटर कस्टमर्स, लाइक वो वैल्यू ज्यादा ऑफर करती हैं आपको, और इसी सेगमेंट को आप इग्नोर करते हैं। और इसीलिए हमारे बैंक में सप्लीमेंट्री कार्ड्स की स्कीमें चला करती थी कि उनको सप्लीमेंट्री कार्ड दो, बिकॉज मर्द तो ऑफिस में होता है, इफ अ वुमन इज आउट एंड शी इज शॉपिंग, शी इज द वन हु इज यूजिंग द कार्ड। अब नाउ यहाँ पे हम कस्टमर ग्रोथ रेट लिखेंगे, कस्टमर ग्रोथ रेट फ्रॉम प्रीवियस ईयर, सो वील से 3%, and then I'm just going to do that percentage sign, and then we're going to say here that it is 1%. I'm assuming it would be less, I'm pretty sure it is less, and this is the growth rate, ठीक है। और यहाँ पर नीचे जाके फिर ये टोटल कर देता है, यानी आपके एसएमई और रिटेल को टोटल कर देता है। दिस माइट नॉट बी ट्रू फॉर अस, ठीक है, बिकॉज इसलिए ये हमारे लिए सही नहीं है, क्योंकि बेसिकली हम तो टोटल एसेट्स पे इकट्ठे काम नहीं करते। यूजुअली एसएमई के सेक्टर में कुछ और लोग होते हैं और उसमें कुछ और लोग होते हैं। अब आप ये देखें, आपके एसएमई सेक्टर का भी पूरे का पूरे ग्राफ्स जो है यहाँ पे तैयार हो गए, ठीक है। ये आपने देख लिया कि आपने जैसे ही अपने बैंक का पूरा डेटा इनपुट किया, your data is shown in these amazing graphs that you can copy and paste in your presentation or product paper, and this will make your business case, ठीक है। ये आपका बेसिक फाइनेंशियल रेवेन्यू कैलकुलेशन इंटरनल डेटा से आपने बना लिया, और ये कोई भी ऐसे फिगर्स नहीं है जो कि इतने एलियन हो कि आपको मिल ना पाए, या मतलब कोई ऐसी मुश्किल फिगर इसके अंदर आपने देखा होगा कि नहीं है। इंटरेस्टिंगली इनफ नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, इकोनॉमी एंड डेमोग्राफिक्स। सो ये जो इकोनॉमी और डेमोग्राफिक्स वाली चीज है, ये आपको हेल्प करेगी बिजनेस केस बनाने में, जब आप मार्केट साइजिंग कर रहे हैं या आप बता रहे हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पाकिस्तान में क्या है और ये उसकी प्रोजेक्शन है, ठीक है। बाय 2025 8.8% ग्रोथ रेट है। फिर ये वर्ल्ड बैंक पॉपुलेशन इन प्रोजेक्शन डाटा है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 2050 तक शुक्र है बढ़ जाएगी। अभी लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर आप देखें तो अराउंड 70 से नीचे नीचे हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। पॉपुलेशन बाय एज ग्रुप, दिस इज रियली इंटरेस्टिंग। मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानी पॉपुलेशन इज बिटवीन द एजेस ऑफ 20, बल्कि 19 से आप आ जाए,
Majority of this is this, and by the year, so ये projection है आगे. कितनी interesting ये चीज है कि projection है कि आगे future में इसकी possibilities क्या है, यानी आपकी ये जो younger population है ये numbers में बढ़ती जाएगी. So you will have, this is the future untapped potential that you have to address. Women's employment by sector. एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा खवातीन है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स 10.8 मिलियन खवातीन है. सो अगर आप एसएमई का कोई लोन बनाने जा रहे हैं और वो कोई एग्री से रिलेटेड है, तो उसमें आप कैसे पोटेंशियल निकाल सकते हैं, लिखा है. इंडस्ट्री जो आपकी सप्लाई चेन के अंदर खवातीन है, सेकंड नंबर पे वो सर्विसेज हैं, सबसे कम. सर्विसेज इंडस्ट्री के अंदर सबसे कम खवातीन है. सर्विसेज में हम भी आते हैं बाय द वे. और यहाँ पर आप देखें प्रोपोर्शन वुमेन एम्प्लॉयड बाय फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर्स. इनफॉर्मल सेक्टर ने तकरीबन 70% खवातीन को एम्प्लॉय किया हुआ है, जबकि फॉर्मल सेक्टर ने सिर्फ 20% खवातीन को एम्प्लॉय किया हुआ है. सो यू नो दीज इकोनॉमी एंड डेमोग्राफिक्स स्लाइड, इट कैन रियली हेल्प यू रियली बिल्ड अ मीटी बिजनेस केस, यू नो. अच्छा, आगे जाएंगे हम फाइनेंशियल बिहेवियर के ऊपर. इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. ठीक है. Current participation, inclusion of women in the financial system in Pakistan. So, you see this, हमने ये उसमें भी जिक्र किया था, women with bank mobile money account only 7%, only 4.5 million खवातीन है out of 49% of the total population जिनके पास, जो कि low hanging fruit है, जो कि उस market में exist करती हैं, जो कि underserved है, जो मैंने आपको पहले बताया था. अच्छा, account ownership by type of financial product, account, financial institution, इंडिविजुअल्स कितने हैं और टोटल परसेंटेज ऑफ बैंक वुमेन कितनी है. देखें कितना इंटरेस्टिंग है. मोबाइल मनी अकाउंट 0.8%, डेबिट कार्ड 0.7%, क्रेडिट कार्ड 0.7%, डेबिट कार्ड 2.7. सेविंग्स एंड बोरोइंग्स, women that saved, women that borrowed. 29.8% women save and 31.4% women borrow. So ये पोटेंशियली अंडर बैंक है. और ये जो बोरोइंग करती हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं आपको दिखाऊं. तो ये सारे के सारा डाटा यहाँ पे आपके पास आ जाता है in the form of graphs that you can use to make a business case. How women save. Saving clubs or person outside family. 16% women are saving in a saving club or person outside family. Why? Because of the thing that I told you before, that women rely on word of mouth and referral marketing more than the formal channel. I mean, they would respond to their aunt, cousin, friend telling them about something. इसीलिए उनके साथ कमेटीज डालती हैं. हालांकि आप देखें कोई कोलेटरल नहीं होता और इसलिए उसके अंदर स्कैंडल और फ्रॉड भी होता है. उनका मनी सेव भी नहीं होता, इंश्योर्ड भी नहीं होता, एंड स्टिल दे कीप ऑन डूइंग दैट. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में सिर्फ 2% खवातीन सेव कर रही हैं. सो इमेजिन द पोटेंशियल कि अगर आप अपने बिजनेस के इसको ऐसे भी बनाते हैं कि यार ये आई एम गोइंग टू मेक दिस अमेजिंग. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टॉक अबाउट अ डेबिट कार्ड. आई एम गोइंग टू मेक दिस अमेजिंग डेबिट कार्ड जो निसा है HBL का, जिसमें अमेजिंग डिस्काउंट्स होंगे. डिस्काउंट्स ऑफ कोर्स बैंक अपनी पॉकेट से पे करेगा, ये पेमेंट स्कीम के साथ पार्टनरशिप करके करेगा. जब आप उसको प्रमोट करेंगे, उसकी वजह से कस्टमर की स्टिकीनेस बढ़ेगी आपके अकाउंट्स के साथ, एंड दे विल कीप द मनी इन योर अकाउंट. सो एनी कंज्यूमर प्रोडक्ट और SME प्रोडक्ट शुड बी लुक्ड इन अ होल rather than just being looked at in isolation. उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी निकालनी है ना आपने, वो उसकी डिपॉजिट की कॉस्ट और सेविंग की कॉस्ट को मिला के निकालनी है कि दिस पर्सन विल बिकम माय कस्टमर, तो इसके पूरे लाइफ साइकिल में आई विल रिमेन द सर्विस प्रोवाइडर टू दिस पर्टिकुलर कस्टमर. What women save for old age, education and fee, to start, operate or expand, only 3% start, operate or expand business को बढ़ाने के लिए जो है सेव करती हैं. क्यों? क्योंकि बड़ी कम खवातीन है इस सेक्टर के अंदर. सो मोर women need to come here. Again, this is a potential possibility. अच्छा, women sources of financial inflows, public sector wages, self-employment, private sector wages. Very, very interesting. अच्छा जी, what women borrow for? Education, health or medical purpose, start or operate, expand business or more. How women access credit? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्रेडिट, यानी जब लोन लेने जाती हैं तो सिर्फ 1% खवातीन आती हैं. सेविंग क्लब यानी ये कमेटी वगैरह 8%. स्टोर डायरेक्ट क्रेडिट, उधार जो चल रहा होता है किराना स्टोर के साथ 17%. और 24% फ्रेंड से बोरो करती हैं. तो व्हाई डोंट यू बिकम देयर फ्रेंड? व्हाई डोंट यू कम फ्रॉम 1% to 24%, गेट अ शेयर ऑफ दिस, बिकम देयर फ्रेंड. Think of a service provider more than a friend to them, like somebody who they can trust, and there is a lot of lack of trust in women. और जो तभी आएगा जब आप एक अच्छी strong product बना सकेंगे. अच्छा, this is the SME sector. Someone in the family already has an account. 15% common barriers to women banking as suggested by respondents. बड़ा interesting है, ये भी आप देखें.
Someone in the family already has an account, so I use it. My brother has an account, my father has an account, तो मुझे जरूरत नहीं है. Lack of trust in financial institution, 14%, an area where you need to work. Lack of necessary documentation. The documentations are so difficult that you cannot get them. 17%. Financial services are too expensive, 21%. Maybe you can give them some discounted services to gain the market share. Insufficient funds, they don't have enough funds. सबसे ज्यादा यही परसेंटेज है, उनके पास इतने फंड्स ही नहीं है कि वो कोई कोलेटरल प्रोवाइड कर सके बैंक को और लोन लेके. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर टू फार अवे. दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वी कवर्ड इन द प्रेजेंटेशन एज वेल, कि आपने सिर्फ जेंडर लेंस जब अप्लाई करना है ना, तो आपने सिर्फ प्रोडक्ट पे नहीं करना. प्रोडक्ट को अच्छा सा पिंक कलर का बना के शेल्फ में नहीं रखना, उसको लोगों तक पहुंचाना भी है. सो ये आपकी सारी चीजें असेस करने वाली होती हैं पॉलिसी बनाते हुए और प्रोडक्ट डेवलप करते हुए, कि ऑपरेशनल एक्टिविटी के ऊपर भी जेंडर लेंस अप्लाई करना है, और जो उसकी डिलीवरी है उसके ऊपर, उसकी पॉलिसी के ऊपर भी आपने जेंडर लेंस अप्लाई करना है. इसी तरह ये एसएमई मार्केट एनालिसिस है. ठीक है, इसमें आपको माइक्रो और एसएमई दोनों का बताया है. एंटरप्राइजेस कितनी है, फाइनेंशियल गैप कितना है, women owned micros एसएमई, एक्सेस टू फाइनेंस, fully constrained, partly constrained, unconstrained कितना है, फिर करंट फाइनेंशियल वॉल्यूम है क्या है. सो ये आईएफसी का डाटा है जो कि आप देख सकते हैं. ये एसएमई का आप जब बनाएंगे. लीगल एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, आई रियली वांट टू क्विकली बिकॉज आई थिंक वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम एज वेल. सो लीगल एंड बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर ये सारे लॉज पाकिस्तान में जो गवर्न करते हैं विमेन को, लैंडिंग को, और उसके अगेंस्ट ये सारी की सारी जो है वो यस और नो में लिखा हुआ है कि कौन सी चीजें हैं जो ये चैलेंजेस बन सकती हैं, सो दैट यू कैन वर्क अराउंड दैट. सो दिस इज द थिंग. फिर उसके बाद आप आगे जाएंगे तो आपको रिटेल मार्केट साइजिंग टूल आ गया आपका, कि जो मैंने आपको बताया था, टैम, टोटल अवेलेबल मार्केट, सर्विसेबल अवेलेबल मार्केट एंड सर्विसेबल ऑब्टेनेबल मार्केट. इन्होंने इसको आसान करने के लिए टारगेट शेयर ऑफ मार्केट बताया. ये जो वही फनल अप्रोच है जो मैंने आपको बताई थी, और इसमें आपका टोटल मार्केट साइज बनता है. तो टोटल अवेलेबल मार्केट साइज आपका बन रहा है 64 मिलियन का, सर्विसेबल अवेलेबल मार्केट साइज बन रहा है 48 मिलियन का, एंड टारगेट शेयर ऑफ मार्केट बन रहा है 14 मिलियन का. यानी बेसिकली 14 मिलियन कस्टमर्स हैं जिनको आप टारगेट कर रहे हैं, विच इज quite a big number. 14 मिलियन के सेगमेंट जो कि अनटैप्ड है, उसको टारगेट करना इज क्वाइट अ बिग सेगमेंट. फिर इसी तरह एसएमई का मार्केट साइजिंग टूल है, जिसके अंदर तकरीबन 10,000 कस्टमर ऐसे हैं जिनको आप टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि women owned SMEs या women owned businesses are very less, but still it's a huge number that you're targeting. मार्केट शेयर एंड रेवेन्यू एनालिसिस, आपने जो भी नंबर्स इनपुट किए थे ना, उसके बाद आपका कंपैरिजन बन गया यहाँ पे, और आपका कह रहा है कि बैंक ऑफ खैबर का करंट मार्केट शेयर 0.011% है, क्योंकि बहुत कम खवातीन है. ये इसने पॉपुलेट किया है पीछे से, वहां से जहां पे हमने डाटा इनपुट किया था, और ये आपको ये बता रहा है कि आपका कितना कम शेयर है. ठीक है, उसके बाद आप चलेंगे फाइनेंस रिटर्न एनालिसिस के अंदर. अच्छा, ये डॉलर्स में आ रही हैं फिगर्स, आप इनको लेफ्ट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल में जाएंगे, करेंसी में जाएंगे, और आप इसको यहाँ से डॉलर को चेंज करके पीकेआर में ले आएंगे. बट आप डॉलर में भी कर सकते हैं, मतलब यू विल ब्रिंग इट इन PKR. अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. यहाँ पर हम डालेंगे अपना सारा एक्सपेंस की शीट, यानी जितना हमारा खर्चा आएगा. तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट, आपको पता है कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए, कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए आपको यहाँ पे फिगर्स डालने होंगे. ईयर 1 में क्या खर्चे आएंगे, ईयर 2 में, ईयर 3 में क्या खर्चे आएंगे. तो जब ये सारा कुछ आप डाल लेंगे तो आपकी प्रोजेक्टेड रेवेन्यू आ जाएगा कि आप कितना रेवेन्यू कमाएंगे. रिटेल बैंकिंग सेगमेंट से 1.4 बिलियन ट्रिलियन का रेवेन्यू कमा सकते हैं. विमेन ओन्ड एसएमई सेगमेंट से 4.8 मिलियन का. टोटल एंटिसिपेटेड रेवेन्यू लेस इन्वेस्टमेंट ऊपर से ये आ जाएगा यहाँ पे नीचे, और आपका कैश फ्लो आ जाएगा नीचे. सो बेसिकली आप जब यहाँ पर इनिशियल इन्वेस्टमेंट डालेंगे, और यहाँ पर आप अदर का भी ऑप्शन है कि आप बेसिकली यहाँ पर जो भी आप अपना खर्चा वगैरह डाल रहे हैं, तो अगर आपका कोई ऐसा खर्चा है जो यहाँ पे नहीं है लिस्टेड, तो आप उसको भी डाल सकते हैं. सो अगर हम यहाँ पे क्विकली डालें, हम कहते हैं कि मार्केट रिसर्च पे हमारे 500,000 लगेंगे, और मार्केटिंग पे हमारे जो है वो 10 लाख लगेंगे. स्पॉन्सरशिप और पार्टनरशिप पे हमारे 200 मिलियन लगेंगे, 20 मिलियन लगेंगे. एम्प्लॉय ट्रेनिंग पे हमारे 10. Non-financial services, collateral printing, other things,
पे कितने लगेंगे? टेक्नोलॉजी इनोवेशन पे यूजुअली ज्यादा पैसे लगते हैं, 100 मिलियन लग जाएंगे। ठीक है, ट्रैवल पे कितने पैसे लगेंगे? तो ये उसको नीचे जाके टीम पीपल में कितने लगेंगे, और फिर कोई भी अदर अदर एक्सपेंसेस यू कैन पुट इन। ठीक है, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट एंड कॉस्ट आ जाएगी यहाँ पे। और इसी को अगर मैं आगे पेस्ट करूँ, ये आ गया, यानी ये डिफरेंट ही होगा हर साल में। पहले साल में हमेशा ज्यादा होगा, तो आप देखेंगे कि आपका नीचे कैलकुलेट होके आ जाएगा कि आपका कितना आएगा। और ये देखें ग्रोथ रेट भी पीछे जो आपने लिखा था ये वहां से ले आया कि आपका ये ग्रोथ रेट है यहाँ पर और ये ग्रोथ रेट है यहाँ पर। तो आपका प्रोजेक्टेड रेवेन्यू आगे कैलकुलेट होके आ जाएगा, लेस इन्वेस्टमेंट। ये यहाँ पर खुद ही क्लिक होके आ गया, इधर भी ये खुद ही आ जाएगा। So if you're doing this, you know, कि कितने आप पैसे कमाएंगे। So this is how it's going to project the revenue. So if you have any questions, I'm done with the and I want to open the floor for any questions that you might have. Sure. Let's see. We have, I think Amreen has another a question. Yeah. Hi, sorry, I'm very curious about Yeah, stuff. of This is course, so please. And interesting. I think you still have, yeah, you still have permission. Okay, to thank speak. you. Yeah. Fawzia, this is remarkable. Just coming to the growth rate. As a person who's practicing this yourself, do you prefer using the World Bank or IMF related growth projections, or do you prefer going by what the government of Pakistan presents in the economic survey and ministry budget presentation annually? Okay, so as far as the growth rate of the external market is concerned, I take the World Bank data. I never take the government data. I take the World Bank data and IFC data, and usually they are the same. As far as the internal growth rates are concerned, of course, we take our own bank's data. But external factors jahan considered hai, we always prefer World Bank data. Yeah. What about the Statistical Bureau of Pakistan? We usually don't, because agar aap research dekhein, so in the past, our growth rates have been much closer to what the World Bank has projected or what the what IFC or some of these international organizations have projected. I mean, if you go back and if you compare what actually happened as compared to what the Statistical Bureau of Pakistan were projecting, in fact, to be honest, none of the banking or financial industry uses the local data. It's either we hire Nielsen or hire Aftab Associates, or a company that makes, if you know, agar koi bada product ban raha hai, a liability product side ban raha hai, so either the research agency does it for us, and their sources are mostly the international data as well. And agar aap us international data mein further jaake deep dive kare, so you will find out that it's more accurate. And if you look at, if you compare the statistic, ये जो पाकिस्तान का statistical bureau है, इसकी projections और आप देखें compare करें उसको से, तो actual में reality has happened closer to the World Bank data as compared to the Pakistan Statistical Bureau. Does anyone else? Thank you, Amreen, once again for enthusiasm and questions. Really appreciate it. Anyone else have any questions? Please raise your hand or comments, any discussion points. Chat box. Yeah, we've answered all the chat box questions for now, but if anyone has a comment or question, I think Fawzia has done such a great job that no one has any questions. We know everything now. We better see the numbers pick up in the women portfolios now, guys. Yeah. From all the participatory banks. So एक challenge जो सबसे ज़्यादा होता है, and I would really request you all that even if you don't have a question regarding Excel, please do share your experience in developing a product and क्या challenges आपको आते हैं. और एक challenge जो मुझे सबसे ज़्यादा आता था, when I was a newbie in this, कि हम कोई प्रोडक्ट बनाते थे कंज्यूमर का, तो हम उसको आइसोलेशन में बना के उसका वर्टिकल देखते थे कि ये प्रोडक्ट हमने बनाया, ये प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट ने हमें क्या प्रॉफिट दिया, जबकि उस प्रोडक्ट को, और हम उसमें कोई डिस्काउंट्स या कोई फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए नहीं लेके आ सकते थे क्योंकि वो फॉरन से इमीडिएटली डायरेक्टली प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट करता था. तो what we did was that we started looking at things from a holistic perspective, like the same customers will have a certain deposit, because your deposit side है, that also current account also generates revenue for the bank. So the same, or saving accounts generate revenues. मतलब कि
आप उसको होलिस्टिकली देखेंगे, एक कस्टमर जब एक बैंक का कस्टमर बनता है तो उसके कई मल्टीपल टच पॉइंट्स हो सकते हैं। और इसमें मैं बैंक अल्फला की एग्जांपल दूंगी, उन्होंने बहुत अच्छा ऑर्बिट्स का कॉन्सेप्ट लेके आए थे, जिसमें कस्टमर वाज रिवॉर्डेड ऑन ऑल ऑफ देयर इंटरेक्शंस विद द सेम बैंक। सो कोई डिफरेंट डिफरेंट लॉयल्टी या रिवॉर्ड प्रोग्राम्स नहीं चल रहे थे। सो जब भी आप कस्टमर के लिए, जब हम कहते हैं खवातीन के लिए हम प्रोडक्ट बनाएंगे, तो बिजनेस केस बनाते हुए जो इंसेंटिव हम खवातीन को दे रहे होते हैं, यू नो सेल्स के लोगों का हमेशा ये कंसर्न होता है कि जी जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके साथ कोई ना कोई इंसेंटिव उस सेल्स बंदे को भी दें और उस कस्टमर को इंसेंटिव मिलना Yeah. चाहिए। उसमें क्या इंसेंटिव्स जो होते हैं, नॉन फाइनेंशियल चार्जेस जो होते हैं उनका वेवर दे दें जी, प्रोसेसिंग फी कम होनी चाहिए, कोई और चीज कम होनी चाहिए। लेकिन इसकी एक डाउन साइड ये भी है कि men start applying using their own women's name and all, because they'll get a discounted rate and all, and so you have to be very very vigilant. बट अगर आप अपना बिजनेस केस बनाएंगे इस तरह जिस तरह हमने आपको सिखाया है, जिसमें आप डिपॉजिट के फैक्टर को बिल्कुल फैक्टर इन कर रहे हैं, तो यू विल develop a very meaty and very convincing business case for a women. और मैंने आपको दिखाई है सारी अपॉर्चुनिटी कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। 14 million women customers जिनको आप रिटेल प्रोडक्ट्स मार्केट कर सकते हैं। आई मीन आई कांट वेट टू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट product myself. So in this bank that I'm in, so it's really interesting. These are really interesting insights that can help you develop a really really good business case. So if you have any questions. Yeah, and the toolkit will help you, when you present it to your management, it's very evidence-based. It's very data-backed. There's a pure business case outlining your will to launch a women-centric. And Fawzia, what you just mentioned about orbits for Alfala, personal story. I have 3 credit cards, and just because of the orbits, I end up using Alfala always. So Alfala gets all the credit card business from me. Yes, Yeah. yes. Because you're of our the, right target audience. as a woman, it excites me to get those orbits and spend them somewhere. Yes, yes. So see guys, this is a really, really interesting tool. I would really encourage all of you to go through each cell, apply your own formulas if you want to, because all the formulas are described. You can make it simpler because ये थोड़ा complicated ज़्यादा या daunting इसलिए भी लगता है क्योंकि इसमें retail और SME दोनों को combine किया हुआ है। तो और क्योंकि मैं बताना चाहती थी कि कुछ लोग शायद SME सेक्टर से होंगे, कुछ रिटेल से होंगे, लेकिन आप इसमें सिर्फ रिटेल वाला पोर्शन लेके कर सकते हैं। वेरी सिंपल, वेरी इजी। टूल किट के अंदर एक एक सेल में कौन सा फॉर्मूला लगना है, जब आप उस सेक्शन पे जाओगे एंड यू ओपन द टूल किट, वो वहां पे आपको बताएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको कहा था, रेवेन्यू पर कस्टमर विल बी कैलकुलेटेड बाय टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ कस्टमर्स, एंड यू विल सी दैट मोस्टली women आर हाई वैल्यू कस्टमर्स। एंड दिस इंटरेस्टिंग इनसाइट एंड इंटरेस्टिंग डेटा अगर आप ये खुद बनाने जाएंगे तो मतलब हम तो खुद बना के यहाँ तक पहुंचे ना कि हमें खुद डेटा भी लेना पड़ता था। जैसे अमरीन अभी कह रही थी कि हम कहाँ जाते थे और कैसे कैसे डेटा सोर्सेस को वेरीफाई करते थे। ये पूरा एक मैंने, अमरीन बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया, क्योंकि मैंने एक पूरा एक एनालिसिस किया था व्हेन आई वाज इन ईमार, एंड आई हैड आफ्ताब एसोसिएट्स के साथ, वेयर वी कंपेयर्ड द डेटा फ्रॉम द पाकिस्तान स्टैटिस्टिकल ब्यूरो एंड द वर्ल्ड बैंक, and we found the World Bank data to be more accurate, because Emaar mein research used to be taken very very seriously. Emaar was a real estate company. They were coming to Pakistan, so real estate sector ke upar wo puri research ho rahi thi, so har cheez wahan pe research based hoti thi. So they used to take research so seriously, it's not even funny. So I got a lot of experience there in research, working with Erickson and Nielsen, and Aftab Associates. So that's where we compared. तो उसमें वो गैलप के सर्वेस भी हैं और आपके पाकिस्तान स्टैटिस्टिकल ब्यूरो भी है और भी जो पाकिस्तानी है। तो हमने देखा कि वो डेटा is much more closer to what the international organizations are projecting, because they have spent years in developing that data, the data bank. So their projections are far more accurate. Participants? Yeah, so Fazia, there's an anonymous comment, and it says, can we review the existing female products currently available in the financial space? This may be a big ask, but may help identify gaps, areas for improvement. I'm not sure if they mean right now or in general. I'm a bit confused about that. So whoever maybe the poster is, if you could kindly elaborate. Ambreen is also saying we are holding... Sorry, just 1 second, Fazia. Also, Ambreen is saying we were holding a brainstorm with SPP last week on agri-finance and just discussing farmer reduction. Same thing, we had a disparity. Interesting. Thank you for sharing that. That's really, really interesting, Ambreen. That's really interesting. So we can have a session where we compare the existing, actually there are not enough women-centric products. If you look at the women's products in Pakistan,
they're exactly the same as the products that are available for men. They're just branded pink. So there is no real difference in क्या वो पॉलिसी में कोई उनको रिलैक्सेशन है. और जब आप पॉलिसी के लोगों के पास जाते हैं जिन्होंने क्रेडिट रिस्क अप्रूव करना है, क्रेडिट अप्रूव करना है, वो स्टेट बैंक के प्रूडेंशियल रेगुलेशंस को जाते हैं. तो ये हमारी बड़ी अच्छी इंसाइट थी फ्रॉम दिस सेशन ऑल्सो, where a lot of participants said that state bank should apply gender lens to their own prudential regulations so that banks can offer these products to these women. So there are not a lot of products to compare, but मैं आपको मोटा मोटा बता दूं तो you can pick a product, compare its schedule of charges में आप जाके उसके charges को compare कर सकते हैं और documentation को compare कर सकते हैं कि criteria क्या है, क्या किसी ने relax रखा हुआ है या किसी ने वैसा ही है जैसा men के लिए है. तो वहां से आपको उन प्रोडक्ट्स की वो नजर आ जाएगी. और एक्चुअली इस बारे में बात करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जितना बात करें कम है. कि भाई जो प्रोडक्ट है, यू हैव टू मेक इट सो दैट इट रीचेस द कस्टमर. It's a failure if the product is excellent, but the access to that product is so difficult within the financial service providers industry that women are unable to access it. You see, अगर हम potential देखें तो there are a lot of women who are looking for loans. एंड अगर हम देखें BOE पॉलिसी की कंप्लायंस को देखें तो बहुत सारे सेल्स के बंदे हैं जो ढूंढ रहे हैं कि यार किसको दे लोन, हमें खवातीन ही नहीं मिलती जो क्वालिफाइड. सो वी नीड टू ब्रिंग यहाँ पे ब्रिज लाने की जरूरत है. ऐसा क्यों हो रहा है कि वो सेल के लोग जो खवातीन को ढूंढ रहे हैं क्योंकि उन्होंने कोटा पूरा करना है, अब क्योंकि स्टेट बैंक ने कहा है कि कंप्लाई करो, तो उनको क्यों खवातीन नहीं मिल रही, कहाँ है वो खवातीन. और अगर आप लेंडर्स को देखें तो लेंडर्स पैसा देने के लिए तैयार बैठे हैं लेकिन उनको खवातीन नहीं मिल रही, और खवातीन पैसा लेने के लिए तैयार है लेकिन उन्हें लेंडर नहीं मिल रहे. सो कहाँ वो एक है ब्रेकिंग पॉइंट, वो उसको देखने And की just to जरूरत add, in the training, we shared some very good products from India across border. Similar cultures, they have very good Yes. credit card products. That could be studied. In That's a very- good case study. Because they have not only cracked the जो फौजी ने भी कहा कि product वही होते हैं बस pink label कर देते हैं, but they've actually cracked the product. So they've designed products that are based on the needs of the women, where they shop, where they what would they need as a financial customer. So I think Indian case studies of banking products, women centric, should be a good read for you. Very good. We also have a comment about climate change, about being such a large issue, and that the gender lens should also be inculcated in that with arable farmers. Back to what Fawzia, you were also saying about the farming potential in these kinds of banking products as well, because they are very underserved. It's an intersection that I would say is extremely underserved. I think we don't have that many questions. I think it's been a really great session. I hope everyone was following. But since you have these resources, we would suggest that you can keep trying to do a little bit of practice. So then, practice makes perfect. So then that should be great. If you have any other questions, any follow-up, I will in the chat. I've put in all of our contact information. Please also follow us on social media. And you have our email address, our website. So if you want more information, for the participants who were not present at the GLI, please do refer to the in-depth article I've shared. It has all of the resources, a lot of the takeaways. We have an album, a show reel. It shows you quite I think it catches you up to speed quite well. So I would highly encourage you to refer to that. I will hand over again to Fawzi and Fiza to just formally close the session, and hope to see you all very soon for the next one. Inshallah, if there's one next one. Yes, no, thank you so much. Thank you, Mavra. Thank you, Fawzia. Thank you to everybody. you. Although I still wish I could see all of you, but it was still great to have all of you here. And I really hope, I've been working in the gender nexus space and the women empowerment space for a while. And when it comes to the financial sector, I think this is the most tangible toolkit, the most tangible business case proposition, which will actually get you to action. So just my parting note of encouragement, or I would like to stress, is that please take this very, very seriously, deep dive into this, play around with this. This is all yours. And it's an internationally certified best practice toolkit guidebook that has been shared with you. So please make the most of it. And if going further, you guys have any questions, feel free to reach out to Fawzia, to reach out to me or Mavra. We're all there for you as you accelerate on this journey of financial inclusion. Thank you. Fawzia, any parting comments from you? You have lots of people reaching. No, thank you so much. This is every time I do a session like this, I'm like, I get so excited because Excel has become my best friend. I think
I think you can invent anything and you can do anything. So Yeah. I really hope that people have really benefited from it and they benefit from it in the future, because जब हम young थे और हम जब space में आए थे तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता था, कोई ऐसी हमें बताता नहीं था, गाइड नहीं करता था, और on job training is the best thing that you can get. So I really hope people benefit from this, and I'll definitely be there. Me and Absolutely. yes. Thank you so much, Mavra, for this amazing Thank you, opportunity. Mavra, and the No, of entire course, PFAN our team. It pleasure. has I'm been glad great we got a working. chance to do a deep dive since there was so much happening at the in-person training. So I'm glad we got to do this deep dive. Thank you, Fawzi and Fiza, for making more time for this, especially our participants. I know it's the middle of the day, so thank you so much. Have a wonderful day, and inshallah, see you guys and keep in touch. Thank you. Thank you, everybody. See Thank you all. you. Take care. Bye-bye. Bye. Hafiz. Khudafis.